In today's video, we'll take you through 3 different hair transplant journeys. Each patient has a unique experience. Let's begin with our first patient and take a closer look at how their journey unfolds. My name is Akash Sharma and I'm 27 years old, and I am facing this hair fall issue since last 5 years, and I uh, I was able to see the hair fall when I used to comb my hair and while using the shampoo. Lots of hair fall happens, and so uh, I was able to uh, see the issue, and then I saw my father also, and I asked him. So he also told me that he also got the hairs like this at the age of 25 or 30. So I found this as a genetic problem in my family. I used a lot of shampoos and hair oils, and I got to know that my dandruff got reduced, but hair fall problem was the same. So now I decided to go for a hair transplant. I have been feeling very nervous since I got the hair fall problem, and so whenever I go to any wedding or with friends outside, so I feel very nervous and ashamed in front of them, and yeah, I also lost my confidence as well. So actually, I saw my friend 2 years ago, and I got surprised after seeing his hair. And then he told me that he got the treatment from the Gurgaon, and then he told me the whole procedure for the hair transplant, and then I got the idea, and I also got excited to go for the same. Then he also advised me to go for the hair transplant. Then since then I was trying to research on the YouTube, and then I got the YouTube videos for QHT Clinic. Then I was researching since last 6 months. When I contacted the QHT Clinic for the hair transplant, they suggested me the graft for my actual condition, and then they suggested the 4,000 grafts for me, and then uh, yeah, I got the idea, and then I came here for the hair transplant now. When I told my father that I am planning for the hair transplant, then he told me that it is not actually safe, and then I told him that it is actually safe procedure, and I gave him the an idea about the transplant that my friend told me. Then he also then got convinced about this treatment. I'm quite nervous right now, so because I am not sure about the how much pain I will feel at the time of treatment, and I am not also sure about the later result after the hair transplant. So also some I have some queries as well, like how will be the condition of the OT when at the time of treatment. So it will be private for me, or how hygienic will be. And yeah, let's see what happens. I have given the blood sample today, and now I am going for the surgery. And I will share all my details and my views uh, along with the my journey for the hair transplant. Thank you. Now let's take a quick look at the patient's condition. He was experiencing diffuse baldness, 5A type of hair loss, where the scalp still has hair, but it becomes extremely thin and weak. His hairline had completely receded, with visible thinning across the frontal, mid-scalp, and crown areas. Despite these challenges, he had a thick, strong, and healthy donor area, which played a significant role in making his hair transplant journey successful. Before we move ahead, if you have any questions or concerns, feel free to share them in the comments section. Our experts are here to personally address your queries and guide you throughout your journey. As soon as our experts assessed the patient's condition in detail, they began the first and most crucial step of the hair transplant journey.
Do you know which step of a hair transplant procedure is considered the most critical and challenging? The answer is hairline designing. This step defines the patient's final look, and it determines whether the result will appear natural or artificial. When hairline designing is performed by experienced and skilled doctors, the outcome is aesthetically flawless and blends naturally with the existing hair. That is why, before undergoing a hair transplant, it is essential to choose doctors who are consistent in this process and have hands-on experience with designing hairlines every single day. And our QHT clinic is known for this consistency and perfection. They have crafted customized hairlines by deeply understanding the facial features of patients across every grade of baldness and have successfully performed over 10,000 hairline transformations. Because of these precisely designed hairlines, our patients achieve results that blend naturally without any artificial appearance. Now, speaking specifically about this patient's hairline design, our experts deliberately again first conducted a detailed examination of his scalp using trichoscopy. After that, the hair was trimmed and a head wash was done. Then, based on the patient's facial proportions, age, frame, and features, a custom-shaped hairline was designed and accurately marked on the upper part of the forehead. The hairline was crafted at a precise distance from the glabella point, which is the center between both eyebrows, to ensure a perfectly balanced and natural appearance. Such intricate detailing is only possible with artistic and well-trained hands. Additionally, they also marked all the affected areas, including the frontal, mid-scalp, and crown regions, were for coverage. While designing, our team considers key factors like the patient's age, face shape, hair direction, and growth angle to create a result that not only looks natural, but also complements the patient's personality and long-term expectations. This helped carry out the entire process with maximum precision, ultimately resulting in a highly natural and seamless outcome. This complete art and science combination provides natural and long-lasting results that are the USP of QHT Clinic, something we proudly offer to each and every grade of patient, whether they have a special case of baldness or any other case. तो मैंने लगभग 5 साल पहले से अपना हेयर फॉल नोटिस किया था। तो मैंने देखा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। जब मैं शैम्पू करता रहा तब भी बहुत बाल झड़ते थे। तो वो सब ठीक नहीं हुआ था। तो मैंने काफ़ी सारे शैम्पू चेंज करके देखे, तब भी कोई फ़र्क पता नहीं चला। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी और मेरे दोस्त ने भी सजेस्ट किया कि ट्रांसप्लांट करवा ले, वो सही चीज़ है। तो फिर मैंने प्लान किया लगभग 6 महीने पहले। तो इसका जो रीज़न है हेयर फॉल का मेरा, तो ये मैंने नोटिस किया कि ये मेरे फादर साइड से है। तो हमारा जेनेटिक है ये। मेरे फादर के भी लगभग 25 या 30 ईयर्स में तो उनके भी बाल कम हो गए थे, तो इसलिए ये जेनेटिक है। मेरे लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए थे जब मेरे हेयर फॉल हो गया था। तो जैसे मैं कहीं पार्टीज़ में जाता था या कहीं भी जाता था तो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। तो मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने में थोड़ा अजीब सा फील होता था। तो मेरे दोस्तों ने भी बोला, काफ़ी उन्होंने टोकना स्टार्ट किया कि तेरे बाल बहुत कम हो रहे हैं। तो मुझे काफ़ी वैसा फील होता था, बुरा। तो मैंने जब यूट्यूब पे QHT की वीडियोस देखी, तो लगभग 6 महीने पहले मैंने देखी थी। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ रिजल्ट से लोगों के। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी QHT पे। तो फिर मैंने प्लान किया लगभग 6 महीने पहले। तो फिर मैंने अभी इनको कॉल की थी QHT क्लिनिक पे। तो उनने मुझे सजेस्ट किया कि आपके लगभग 4000 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे आया और मैंने पूरा प्लान किया QHT पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ये पूरा हेयर लाइन कवर की है और पीछे तक क्राउन एरिया भी कवर किया गया है। तो अभी जिस हिसाब से मेरे ग्राफ्ट्स लगे हैं और पूरा हेड कवर किया है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ रिजल्ट के लिए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं काफ़ी नर्वस था सर्जरी से पहले, मुझे डर लग रहा था कि काफ़ी पेन होता होगा। तो फिर जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई सुबह, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, पेन किलर वगैरह। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे OT रूम में लेके गए। फिर डॉक्टर से मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा था कि हम आपको ये एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो अगर पेन वेन हो तो बता देना, पहले से कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। वो लगातार मुझसे बात कर रहे थे।
तो उन्होंने जब एनेस्थीसिया दिया तब भी उनने एक प्रॉपर वाइब्रेशन वाली मशीन होती है वो यूज़ की थी, ताकि मुझे पता ना चले उस पेन का भी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से वो एनेस्थीसिया दिया पूरे यहाँ पे हेयर लाइन पे और हर जगह हेड पे यहाँ पे। तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसा पेन वेन ज़्यादा फील नहीं हुआ था मुझे उस टाइम पे। और उसके बाद एनेस्थीसिया के बाद जो था वो पूरा सर जो है वो सुन्न हो गया था, तो मुझे सर्जरी का कुछ पता नहीं चला उसमें। और डॉक्टर्स मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि कोई पेन वेन हो तो बता देना, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। और बीच बीच में मुझे रेस्ट भी दे रहे थे कि रिफ्रेशमेंट दे रहे थे, खाने के लिए दे रहे थे, और बार बार पूछ भी रहे थे कि अगर कोई ब्रेक चाहिए तुम्हें, वॉशरूम जाना है, कोई भी ब्रेक चाहिए तो बता देना। तो सर्जरी से पहले मुझे लग रहा था कि काफ़ी पेन होगा, और हाइजीन का भी मुझे ज़्यादा वो नहीं पता था कि ब्रेक्स वगैरह मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कि डॉक्टर मुझसे पूछेगा पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि डॉक्टर को कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तो मुझे लगा वो सर्जरी वैसे ही कर देंगे, मुझे पेन हो रहा हो या ना हो रहा हो। लेकिन जब सर्जरी के टाइम पे उनने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया, और बार बार मुझसे पूछ भी रहे थे कि पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर मैंने एक बार बताया भी था उनको कि मेरे को हेयर लाइन पे पेन हो रहा है, तो उन्होंने मुझे दोबारा एनेस्थीसिया दिया था। तो काफ़ी डॉक्टर भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। और बस मेरे डाउट्स जो थे ये क्लियर हो गए थे सर्जरी के बाद। मेनली तो ये पेन वाला था, और बाकी हाइजीन वगैरह। और एक डाउट ये भी था कि सर्जरी के बाद सूजन वगैरह ज़्यादा आएगी, कब तक पेन होगा, या फिर एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद ज़्यादा पेन तो नहीं होगा ज़्यादा 1-2 दिन बाद। तो मेरा वो डाउट भी क्लियर हो गया है, मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है पेन वगैरह भी। यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर का है, और वो लगातार हमसे पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ आपको कुछ रिफ्रेशमेंट या पानी वगैरह कुछ चाहिए तो नहीं। तो उनका नेचर काफ़ी सही है, वो कभी भी मतलब लेफ्ट आउट फील नहीं करने देते हैं। और वो हमारे मन की भी बार बार पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है, और पेन वगैरह ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और जो रिसेप्शन पे हैं लोग या कोई भी लोग हैं, क्लीनिंग वाले जो भी हैं, वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, और हमारी हेल्प भी बहुत करते हैं हर चीज़ में। तो ये थी मेरी 3 दिन की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। तो अब मेरा जो भी रिजल्ट आएगा, या फिर मैं पीआरपी कराऊंगा 1 महीने बाद, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। जो भी एक्सपीरियंस होगा सब बताऊंगा और सब शेयर करूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर पीआरपी सेशन पे। टाटा बाय बाय। During the procedure, our experts carefully followed the pre-marked zones and slit directions. They carefully implanted single and thin hair follicles in the hairline area to ensure a natural and soft appearance. In the frontal and mid-scalp regions, double and triple hair follicles were implanted to provide fullness and enhanced density. For the crown area, where a natural swirl pattern was desired, a combination of single, double and triple follicles was implanted at varying angles to replicate the natural hair growth direction. In total, 4,500 grafts were implanted, all extracted from the patient's safe donor zone, ensuring lasting and natural-looking results. After the transplant, our medical team provided the patient with a comprehensive care plan, essential for ensuring proper healing and long-term graft survival. 1. During the first 5 to 8 days post-surgery, special care is crucial. 2. Protect the scalp from dust, pollution, and direct sunlight. 3. Always wear a loose-fitting surgical cap to prevent friction. 4. Never scratch or touch the transplanted area, even if you feel itching. Let it heal naturally. 5. Use a saline spray twice daily to keep the scalp clean, hydrated, and infection-free. These simple yet powerful precautions help create the ideal environment for the grafts to settle, heal, and begin their growth cycle smoothly. Refrain from touching your scalp when it itches, as doing so can be harmful to you because it can act like an enemy to your follicles and potentially damage them. If you do not want to erode your follicles, make sure to strictly follow our doctor's instructions. मेरा नाम आकाश है, मेरी एज 27 ईयर्स है। तो मेरा जो हेयर फॉल है लगभग पिछले 3-4 साल से हो रहा था। तो मैंने जब नोटिस करना स्टार्ट किया, तो फिर ये मेरी जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो रही थी काफ़ी। तो दोनों साइड से ऐसे काफ़ी रिसीड हो गई थी, और हेयर्स जो है वो वापस आ नहीं रहे थे। मैंने काफ़ी ऑयल्स वगैरह, शैम्पू वगैरह काफ़ी यूज़ किए, और कई लोगों ने मुझे नुस्खे वगैरह भी बताए थे, देसी नुस्खे। तो मैंने ट्राई किए, तो उनसे भी कुछ खास फर्क आया नहीं। तो फिर मैंने दोस्त ने भी ट्रांसप्लांट करवाया था, तो उसने मुझे रेकमेंड किया। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया था ट्रांसप्लांट के लिए,
तो मैंने वहाँ से फिर QHT क्लिनिक की वीडियोस वगैरह देखी। तो जैसे यहाँ से राजपाल यादव सर ने करवाया था, काफ़ी लोगों ने करवाया था। तो मैंने फिर अपना डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ से करवाना है। फिर मैंने लगभग 1 महीना मुझे हो चुका है ट्रांसप्लांट करवाए हुए। तो अभी मैं PRP के लिए आया हूँ और पहली PRP मेरी हो चुकी है आज। तो मेरी सर्जरी हो चुकी है 1 महीने पहले। तो मेरे ग्राफ्ट्स जो लगे थे वो लगे थे 4700। तो मेरे काफ़ी डाउट्स थे सर्जरी से पहले कि कितना पेन होता होगा, क्या कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, या कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो जाएगी बाद में। काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो जब मैंने करवाया तो मेरे कई डाउट्स क्लियर हुए। तो काफ़ी मिथ्स भी थे, जो कई लोग बोलते थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा बहुत दर्द होता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग एनेस्थीसिया देते हैं और वो सर बिल्कुल सुन हो जाता है, तो पता भी नहीं चलता, जैसे चींटी काटती है ऐसा फील होता है। और डॉक्टर्स भी, जो डॉक्टर की टीम है वो काफ़ी कोऑपरेटिव थी, उनने काफ़ी हेल्प भी करी। और वो पूरी सर्जरी के टाइम पूछ रहे थे कि कहीं पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो मैंने एक बार बताया भी था कि मेरे को हेडलाइन के वहाँ पे आगे पेन फील हो रहा था। तो उन्होंने दोबारा एनेस्थीसिया दिया, तो तब फिर मुझे पेन फील नहीं हुआ दोबारा। तो डॉक्टर्स की टीम भी काफ़ी अच्छी है, हेल्प करती है और कोऑपरेट करती है। जब सर्जरी के बाद मैं घर पे गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी। जैसे कि मुझे अगले ही दिन स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई थी फेस पे। तो स्वेलिंग जैसे यहाँ पे फोरहेड पे स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे यहाँ साइड में वो पूरा मतलब मुँह, फिर 2-3 दिन तक स्वेलिंग रही थी, पर पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसे डॉक्टर ने बोला था कि मेरे को पूरा यहाँ जो ट्रांसप्लांटेड एरिया उस पर वाटर स्प्रे करना है, तो मैं स्प्रे कर रहा था रेगुलरली। और फिर मैंने बैंडेज वगैरह भी रिमूव कर दी थी अगले दिन सर्जरी के। फिर मैं टैबलेट्स वगैरह भी ले रहा था, तो दवाई थी। और फिर मैंने 1 हफ्ते बाद नोटिस किया कि जो मेरा जो डोनर एरिया है वो हील होना स्टार्ट हो गया था। 3-4 दिन बाद उसके हो भी गया था हील। तो लगभग 10 दिन के बाद मुझे फील हुआ कि वो पूरा हील हो चुका है अच्छे से। और जो बाल भी हैं वो मुझे दिखने स्टार्ट हो गए थे एज कम्पेयर टू पहले के हिसाब से। तो उसके बाद फिर लगभग 7 दिन बाद ही जो यहाँ पे ब्लड क्लॉट्स जो जमा हो जाते हैं आगे ट्रांसप्लांट एरिया पे, वो भी रिमूव हो गए थे आफ्टर 2 और 3 हेड वॉश। तो सब रिमूव हो गए थे। तो उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे जो बाल हैं वो दोबारा गिरने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं एक बार को डर गया था। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि वैसे ऐसे मेरे बाल जो है गिर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्कुल कॉमन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये शेडिंग फेज होता है, तो सबका स्टार्ट होता है सर्जरी से 2 या 3 हफ्ते बाद। तो वो मेरा स्टार्ट हो चुका है लगभग अभी। तो अभी शेडिंग फेज ही चल रहा है। सर्जरी के बाद भी जो है QHT की टीम हमेशा टच में रहती है। वो डेली मुझसे पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग। तो टीम काफ़ी अच्छी है, मतलब प्रॉपर डेली बेसिस पे इंक्वायरी करती है, पूछती है हर एक चीज़। और बस अगर हेडलाइन के बारे में बात करें तो हेडलाइन मुझे काफ़ी ठीक लगी। मुझे अपने फेस के हिसाब से जो है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और जैसे कि पहले मुझे अजीब लगता था, जैसे मैं मिरर में अपने आप को देखता था तो मुझे देखने का भी मन नहीं करता था कई बार, क्योंकि हेयर लाइन बिल्कुल पीछे जा चुकी थी, बस थोड़े से बाल दिखते थे आगे की तरफ। तो अब मेरी प्रॉपर हेयर लाइन आ चुकी है, तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपना रिजल्ट देखने के लिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक पूरा सर्जरी से लेके अब तक PRP तक, वो काफ़ी अच्छा रहा है। अभी तक तो मुझे कोई भी ऐसी कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सब चीज़ मुझे अब तक सारी चीज़ें सही लगी हैं। तो मैं जब भी सेकंड PRP के लिए आऊँगा तब मैं आपसे अपना और आगे का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तब तक आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। 1 month after the transplant, the patient returned to the clinic for his first follow-up PRP session, a vital step in boosting hair growth and nourishing the scalp. During this visit, our experts observed a normal phase of the hair restoration journey. Approximately 50% of the transplanted hairs had shed, a temporary phase known as the initial shedding phase. While this may seem concerning, before beginning new healthy growth, on a positive note, the patient's donor area had healed beautifully, showing no signs of scarring or damage,
which is a strong indicator of successful extraction and postoperative recovery. This stage marks a turning point in the hair transplant journey, where the path to new hair growth officially begins with visible changes just around the corner. During this period, the patient is generally optimistic and maintains a positive stance on their upcoming growth. Now let's take a closer look at his scalp and see the transformation after getting the transforming results. Now it's time to show you his comparison from his post-surgery and 1-month PRP sessions. Post-surgery care versus 1-month PRP session. Because now it is time to show you a powerful visual comparison that helps you understand the step-by-step difference and progress each month from the immediate post-surgery phase, where the focus is on healing and protection, to the 1-month mark, where the journey moves into a new stage with the first PRP session aimed at stimulating fresh and healthy hair growth. After the transplant, the focus is all about protection and healing. Our team provides a strict care routine. Avoid dust and direct sunlight. Wear a loose surgical cap. No touching or scratching the scalp. Regular use of a saline spray for hydration and cleanliness. These precautions are essential to help the DHT-resistant grafts settle, heal, and survive in the new scalp environment. This phase lays the groundwork for successful growth. Fast forward to 1 month and the focus shifts. This is when the patient enters the natural shedding phase, where the transplanted hairs fall out. We know it sounds scary, but don't worry about this. It's a completely normal part of the growth cycle. This means the follicles are going into resting mode, preparing for new and stronger hair growth. During this stage, PRP therapy takes over. It nourishes the scalp, boosts blood supply, strengthens the roots, and accelerates the growth cycle. Worried about shedding? Consult with experts who can guide you through every stage post-transplant. Does a reputed clinic play an important role in providing natural hair transplant results? So, how can I choose the right clinic for my natural hair growth? Yes, reputable clinics play an important role in providing natural hair transplant results, and the clinic should be fully focused on hair transplants only, should have in-house permanent doctors, not freelancers hired per case. Like 95% of clinics do, should provide genuine patient references and beware. Many clinics show fake AI-generated images or steal other clinics' before-after photos. Always ask for unedited raw photos, video results, and even meet past patients if needed. These are all factors which provides help you choose the right clinic for your natural hair growth. How long do hair transplant results really last? If your hair transplant is done using the right technique, by the right surgeons, like with the QHT method, and if you follow proper post-care, the results can last for many years. In fact, as seen in many of our videos, we have shown 4-year results that not only sustain over time, but actually appear stronger and more natural as the years go by. Can the transplanted hair look completely natural? Yes, absolutely. With expert planning and artistic hairline design, transplanted hair blends seamlessly with your natural hair. In many cases, the hairline, temples, and crown are restored so naturally that it is almost impossible to tell that a transplant was ever done. You can find not just one, but thousands of such results on our channel, including cases of severe baldness and even burn restoration. When will I start seeing real growth after a hair transplant? Most patients begin to notice early signs of growth around the 3rd to 4th month. Visible density usually starts improving from the 6th month, with final results becoming clear between 10 to 12 months. In this patient's case, we have currently shared only the 1-month progress, which mainly shows the shedding phase. That is why patience is extremely important, because the real transformation unfolds over time. A natural, long-lasting hair transplant is possible even in advanced diffuse baldness, when done with the right technique, expert planning, and proper care. Akash Sharma's journey is proof that with patience, precision, and professional guidance, you can confidently go from bald to bold. Now, let's move on to our next patient and see how their journey progressed through the different stages of recovery. Today we are excited to share a transformation journey who was facing the challenges of Norwood grade 3 baldness. His hairline completely receded and changed into an M shape. In the frontal area, thinning was visible, which affected his facial appearance.
However, he had thick and strong hair in the mid-scalp and crown regions. Thankfully, his donor area was completely healthy, which would be useful for the transplant. Let's take a look at the results. After examining the scalp, our experts designed a custom hairline tailored to the patient's age and facial features. The hairline was set slightly lower in the middle, maintaining a distance of 7 cm from the glabella point, and also marked the affected areas. After marking all the affected areas, our experts began the implantation process. They carefully implanted single thin hair follicles in a zigzag pattern within the hairline zone to create a natural look, ensuring a seamless transition that matched the patient's original hair growth. To add volume to the frontal area, they implanted double and triple hair follicles, which provided a fuller and more natural density. In total, 3,200 grafts were implanted, all extracted from the patient's safe donor zone. Four months after the transplant, when the patient visited for his first follow-up PRP session, our experts noticed the shedding phase was completely over and the native hairs began to merge with the transplanted hairs. During this time, his donor area was completely healed. In the upcoming months, even better results were expected to be visible. Ten months after the transplant, the results were outstanding. Day by day, the hairline became more defined and the frontal area gained voluminous density. The follicles were growing maturely, adding more volume to the scalp. It was encouraging to see the continued progress in the patient's journey post-transplant. With each passing day, the emergence of lush, voluminous hair growth confirmed the success of the procedure. This ongoing improvement highlighted the effectiveness of our approach and the commitment of both the patient and our team to achieve optimal results. This result shows that hair transplant results are permanent because many believe that the results are temporary. If you get inspired by the patient's journey, then book a consultation with our experts and take a step to overcome your baldness. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.